तो बच्चों कैसे हैं आप। मैं तो बहुत मस्त हूं। और अब हम लोग एक ऐसे कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं जो एड्यूश्योर का अंडरडॉग है, जो आपके प्रिपरेशन का अंडरडॉग है, जो इतना मिस इंटरप्रेटेड है, जो स्लोली अपना काम करता चला जाता है, बट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये कोर्स का नाम है इको फाउंडेशन। इको फाउंडेशन इज अ कोर्स जब आप अपने सेकेंड ईयर में ही प्लान कर लेते हो कि 2 साल के बाद में मुझे एमए इको के एग्जामिनेशंस के एंट्रेंसेस के लिए बैठना है, एंड आई वांट टू टारगेट अ करियर विथ कीपिंग इन माइंड अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शन। ओके, देखिए, 1 साल का कोर्स जो है इको टॉपर, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड कोर्स, राइट, सबके बस का नहीं है। इको फाउंडेशन आपको टाइम देता है, आपको अट्यून करता है कि व्हेन यू गो इनटू एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द पीवाईक्यूज एट अ लेटर टाइम, यू विल फील एट होम, यू विल फील कंफर्टेबल। तो ये कंफर्टेबल होने का टाइम आ चुका है। अच्छा, इको फाउंडेशन एक ऐसा कोर्स है जो हफ्ते में खाली 2 दिन होगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज। यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। एवरी वीक यू विल हैव टू ओनली कमिट 2.5 घंटे के क्लासेस होंगे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, एंड यू विल हैव टू कमिट डबल ऑफ दैट, 2.5 घंटे और। तो हफ्ते में आपको खाली 5 घंटे देने हैं फॉर दिस कोर्स। और इन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स, 10 महीने का कोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली, अगले 10 महीने में यू विल ऑटोमेटिकली बिल्ड अ बेस विच विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल गोइंग इन टू द थर्ड ईयर। ठीक है, तो इको फाउंडेशन कोर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, के क्या फीचर्स हैं, अगर उसको जानना है, प्लीज टाइप एफ फॉर फीचर्स इन द चैट बॉक्स। सही है। चलिए, लेट्स बिगिन विथ इको फाउंडेशन। सबसे पहला सबसे पहला फीचर जो लोग समझ नहीं पाते हैं, आपका एमए इको एक अलग गेम है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। आपका जो सेमेस्टर चल रहा है, अगर आप इको बैकग्राउंड से हैं, तो अगर वो गेम ऑफ फुटबॉल है तो ये गेम ऑफ क्रिकेट है। तो अच्छा सेमेस्टर का परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी कि आपका एमए इको एंट्रेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नहीं गारंटी है, देयर इज नो गारंटी। ओके, इसीलिए इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे एमए इको करना है, जिस समय डिसाइड किया उसी समय प्रेपरेशन में लग जाइए। क्योंकि क्योंकि जितना टाइम आपके पास में है उतना ही कम है। द मोमेंट यू डिसाइड, गेट इनटू इट, क्योंकि ये अलग गेम है। और ये गेम में प्रोफिशिएंसी लाना इज गोइंग टू टेक यू टाइम। कोई भी गेम को मास्टर करने के लिए, द मोर टाइम दैट यू हैव, इट इज बेटर फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स ओवरलुक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज योर चांस टू 50%। 50% of the students who take the eco foundation and the eco topper course as a combined course make it to their dream institute। वो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हैं। इट्स अ स्टैगरिंग नंबर। जो इको टॉपर लेता है वो परसेंटेज इसके आसपास भी नहीं है। द स्टूडेंट्स हु टेक इको फाउंडेशन एंड इको टॉपर, वो पहले से ही डिसाइडेड है कि हाँ, मुझे कुछ अचीव करना है। उनका फोकस एक अलग ही लेवल पे होता है, उनका प्रेपरेशन एक अलग लेवल पे चला जाता है, दैट इंक्रीजेस द चांसेस टू
50%, दैट्स अ स्टैगरिंग नंबर। तो अगर आपको भी अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, परसेंटेज तो साइड में रखते हैं, द डिसीजन एंड द रिजल्ट इज इन योर हैंड। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पहुंचना है आईएसआई में, अगर वो आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है जो मेरा था, तो अभी के अभी स्टार्ट करिए, मेक इट हैपन। So increase your chance to 50% by going into the double course of Eco Foundation and as well as Eco Topper. Okay. Semester courses. पहले 10 स्टूडेंट्स के पास में इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है कि इको फाउंडेशन के साथ साथ में आपको सेमेस्टर कोचिंग भी मिल रहा है as complimentary, free of cost. So one of the courses of your semester, the course that you choose, you'll get coaching for along with your eco foundation. How awesome is that? पूरा स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी आपको दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जितने कॉमन है यूनिवर्सिटीज जहां से आ रहे हैं हम लोग के पास में स्टूडेंट्स, उनके कोर्सेज हम लोग के पास में रेडीमेड हैं। एंड वी विल इंश्योर दैट पहला 10 स्टूडेंट्स गेट प्रॉपर गाइडेंस इन नॉट ओनली देयर एमए इको जर्नी बट ऑल्सो देयर कॉलेज जर्नी, राइट? तो ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इको फाउंडेशन। चौथा फीचर, स्टूडेंट्स जो इको टॉपर को ज्वाइन करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूं 20 आवर्स इन अ वीक। बट इको फाउंडेशन में आपको चाहिए 5 घंटे अपने सेमेस्टर के साथ साथ में। योर एमए इको प्रेपरेशन को बैलेंस आउट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, का जो चैलेंज है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने 5 घंटे दे दिए अगले 10 महीने के लिए इन योर इको फाउंडेशन कोर्स, टू बिल्ड योर फाउंडेशन, टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द बुर्ज खलीफा दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड इन योर इको टॉपर कोर्स, अगर अच्छा फाउंडेशन आपने बना लिया 5 घंटे अ वीक, तो जो 20 आवर्स अ वीक मैं आपको बोल रहा हूं फॉर योर इको टॉपर, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस ड्रास्टिकली, दैट विल रिड्यूस अ लॉट। जितने सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज आपको ऑलरेडी इको फाउंडेशन कोर्स में आ चुका होगा, तो इको टॉपर में यू आर ओनली गोइंग टू गो इनटू सॉल्विंग एंड सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। तो ये जो टाइम का कमिटमेंट है, ये आपको थर्ड ईयर के टाइम के कमिटमेंट को बैलेंस आउट करने में बहुत फायदा देने वाला है। Okay, so 5 hours a week is all the time commitment that we need from you for the Eco Foundation course. जो कोर्स अभी स्टार्ट होकर अगले साल मई एंड तक चलेगा, ये कोर्स will make sure that you are totally committed, totally in tune with your MA Eco preparation. पांचवा पॉइंट is the course itself. ठीक है, कोर्स के फीचर्स में सबसे पहला फीचर 2 days अ वीक है। कौन से डेज है? वेडनेसडे है एंड फ्राइडे है, सॉरी सैटरडे है। क्या टाइमिंग है? 5:45 PM से स्टार्ट होगा हम लोग का क्लास, विच विल एंड एनीवेयर बिटवीन 6:45 to 7 PM। तो 1 से 1.25 घंटे के क्लासेस होने वाले हैं, ज्यादा लंबे क्लासेस नहीं होंगे, तो टाइम का कमिटमेंट भी आपके पास में उतना नहीं रहेगा। 1.25 घंटा, 1.25 घंटा, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे के क्लासेस और 2.5 घंटे का सेल्फ स्टडी, दैट्स ऑल दैट वी रिक्वायर। ओनली 5 hours in a week is the requirement for the Eco Foundation course. Okay, so 6:45 to 7 PM is the ending time. ये कोर्स के साथ साथ में खाली क्लासेस के बारे में नहीं है, ये कोर्स के साथ साथ में क्लास के ठीक बाद में, बिकॉज द क्लासेस आर कंप्लीटली प्री प्लान्ड,
exactly tailor made so that each of you get the opportunity टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इनसाइड आउट. जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें हम लोग आपके साथ में क्वेश्चंस भी करते हैं, एंड क्लास के ठीक बाद में वी गिव यू एक्सेस टू द समरी ऑफ द क्लास, वी गिव यू फ्लैश कार्ड्स, वी गिव यू अ क्विज इन ऑर्डर टू सीमेंट ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट टॉट इन क्लास. तो ये तीन चीज राइट आफ्टर क्लास आपको मिलता है. ये देखिए, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा. स्कैन द क्यूआर कोड टू इंस्टेंटली एक्सेस द क्विक एक्सेस स्टडी टूल्स. क्या क्या स्टडी टूल्स है? क्विज है, फ्लैश कार्ड है, समरी शीट है. इसको खाली स्कैन करना है और आपको इंश्योर करना है कि आप ये तीनों चीज अगर करते हो, अगर आपने समरी देख लिया तो जो आपने शायद मिस कर गया बिकॉज ऑफ अ सर्टन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी आप पकड़ लेंगे. ओके, फ्लैश कार्ड्स का आंसर्स अगर आपने कर लिया तो इंस्टेंटली आपको समझ में आ गया कि जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया. एंड क्विज का अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपका हो रहा है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इट्स अ वेरिफिकेशन. नहीं तो क्लास करने के बाद में कहीं ना कहीं वी माइट फील कि हाँ मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट क्विज देते समय यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट यू डू नॉट नो, दैट यू डू नॉट नो. आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया था वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, एंड यू विल प्लग इन ऑल द गैप्स. एंड वंस यू डू दैट, आपको एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that is the beauty of the quiz and the flashcards that will give you a verification कि हाँ आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया. Alright? इसके साथ साथ में you get an amazing student portal. अब ये स्टूडेंट पोर्टल इज गोइंग टू बी द की इन योर प्रेपरेशन. बहुत कुछ हम लोग क्लास में कराते हैं, फिर आपको एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चंस देंगे. सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एज अ होमवर्क जो आप खुद से ट्राई करोगे. उसके आंसर्स भी पोर्टल पे हैं. यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑन द स्टूडेंट पोर्टल. अब पोर्टल को दिखाने का टाइम आ गया है. दिस पोर्टल इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 10 months. अगले 10 महीने के लिए ये पोर्टल को प्लीज बुकमार्क कर लीजिए ऑन योर ब्राउजर, या अपने मोबाइल फोन में उसको बुकमार्क करके रख लीजिए. उसका शॉर्टकट अपने होम पेज पे रख लीजिए ऑन योर मोबाइल फोन. ओके, तो पोर्टल को दिखाने का टाइम आ गया है. लेट मी टेक यू थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल. So each of you will be given a link. You have to basically enter the user ID and password and आप login करोगे. login करने के बाद में I will show you कहां पर आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखता है. ये देखिए स्टूडेंट पोर्टल खुल गया. इको फाउंडेशन का स्टूडेंट पोर्टल आपको दिख गया. सब्जेक्ट्स यहां पर हैं. ओके, अब मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक है लॉगरिथम एंड नंबर सिस्टम. उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं जो अटैचमेंट में है. उसके साथ साथ में जो बेसिक के वीडियोस हैं, जो शीट के प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने क्लास में कर रखे हैं, प्लस जो आईएसआई के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आपको मिल जाते हैं ऑन द स्टूडेंट पोर्टल. इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टूडेंट पोर्टल इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट, इज योर बेस्ट फ्रेंड. और वो सारे टॉपिक्स के आपको मिलते हैं. नोट्स के जगह में नोट्स मिलेंगे, वीडियो की जगह में वीडियो मिलेंगे. ऑलराइट, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है. आपके टेस्ट्स भी यहीं पर ही होंगे. रेगुलर टेस्ट्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू ऑन द स्टूडेंट पोर्टल. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू गिव एटलीस्ट 2 tests इन अ मंथ. ठीक है, ज्यादा कमिटमेंट एज आई सेड मैं नहीं लूंगा. 2.5 घंटे का क्लास इन अ वीक.
2.5 घंटे का सेल्फ स्टडी एंड 2 टेस्ट्स अ मंथ इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू। उतना अगर आपने कर लिया, थर्ड ईयर इज गोइंग टू बी अ स्मूथ सेल फॉर यू, बहुत ही स्मूथली निकलने वाला है। ओके, अब आपको शेड्यूल भी शेयर मैं कर देता हूं। When you are a part of the course, you get access to the course schedule as well. जो शेड्यूल है ऑफ द कोर्स वो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसा दिखेगा। और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पुट है, तो कौन सा तारीख पे कौन सा टॉपिक होने वाला है। जैसे आज है August 27, 2025, ओरिएंटेशन एंड लॉगरिदम है, ये ओरिएंटेशन चल रहा है, इसके बाद में लॉगरिदम का क्लास होगा। सैटरडे को बजट लाइन एंड प्रेफरेंसेस करेंगे फिर। सो पूरा प्लान आपको मिल जाता है यहाँ पे। ओके, वी विल कीप अपडेटिंग दिस एज वेल। ओके, तो दिसंबर तक इसको फॉलो करिए। देन विल टेक अ कॉल कि व्हाट एरिया हैज टू बी मॉडिफाइड। उसको मॉडिफाई करके आपके क्लासेस मई तक चलने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया क्लास का शेड्यूल। सो कोर्स क्या है, 2 डेज अ वीक है। क्लासेस आर प्री प्लान्ड। क्लास के ठीक बाद में 3 काम आपको करना है। एक, क्लास का समरी को अच्छे से देखना है इन ऑर्डर टू सी कि यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। फ्लैश कार्ड से वेरीफाई करना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं या नहीं। क्विज देकर आपको वेरीफाई करना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। ओके, फिर पोर्टल विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। पोर्टल पे सारे क्वेश्चन, सारे होमवर्क के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। So use it for not only a revision, but also to see the answers of the practice questions and attempt, attempting the topic tests at a regular basis. Class ka schedule is already put as a link on your WhatsApp group. ठीक है, तो ये है all the information about the Eco Foundation course. I am extremely excited to go into the first class now. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के के क्लास का कंटेंट, विच इज लॉगरिदम। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन विथ लॉगरिदम एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो इनटू नंबर सिस्टम। चलिए, लेट्स गो इनटू इट। Let's begin with the topic logarithm today. Logarithm was invented by the mathematician John Napier in the 17th century. 17th century का मतलब है 1600s में इन्होंने logarithm को invent किया to do complex astronomical calculations. ठीक है, complex astronomical calculations के लिए logarithm was invented. Ultimately today it is so used for exponential calculations, exponential growth, exponential interest rate, continuous compounding. These are many terms that each of us will come across when it comes to economics, and all of these have an application of the topic logarithm. So logarithm was invented in the first place in order to deal with complex astronomical calculations, and basically to deal with exponential functions. It allowed mathematicians to convert multiplication and division problems into simpler addition and subtraction problems. Okay, now before we go into the topic, I would want each of you to be able to solve a problem. This will make me understand कि कितना आपको आता है
logarithm. एक second. Put this on the whiteboard. Question numbers 1 to 6. Please try and solve. I'm giving you 5 minutes. 5 minutes में you should be able to put your answer in the chat box. ठीक है? Put करिए answer. ये this is basically log 27 to the base 3, log 8 to the base 2. ये underscore का मतलब है base. तो ये 2 is in the base. यहाँ पर 5 is in the base. यहाँ पर 4 is in the base. So on and so forth. ठीक है? Try and answer it and put your response in the chat box. In 5 minutes, put it there. I want to see कितना knowledge आप लोग सबको है. And if you are not able to answer this, we will ensure कि next 20 minutes में we do a few things so that each of you are able to answer all these questions. ठीक है? So make your best attempt. I am giving you 4 more minutes. 8:05 पे I will be starting off the class again.
So I see that most of you are not able to solve all the 6 questions. Only about 5 or 6 of you have been able to answer all the 6. The others haven't been able to do that. So let's understand what logarithm is and then go back to all these questions. Okay. So logarithm was invented in order to deal with exponential functions. Like, for example, just to give you an example, it's easy for us to find out the value of x for this equation because I know that 2 cube is equal to 8. But what if I tell you 2 to the power x is equal to 10? How will I find out the value of x? The the answer lies in logarithm. What this gives us is something like this. This will give us x is equal to log 10 to the base 2, right? This will give us this equation, and log 10 to the base 2, if I find out, I will be able to find out the value of x. Now, that is how it was invented. So, for example, an 8 to the power x is equal to b will be written as x is equal to log b to the base a, right? At this juncture, it becomes extremely important for me to ask you a few questions. First, what is the domain of logarithm? What do you mean by the base? What is the range? And what is the graph of a log function? Is it increasing? Is it a decreasing function? So these are a few questions that will uh, be extremely important, right? Like, for example, if I have log b to the base a, now what is the range of b, right? What values can b take? Can any of you put it in the chat box? What value can b take? Okay, what is the meaning of this base, right? Can I ask some of you? Let's see. Right. Okay. Let's ask. Okay. Akshata, can you answer? Hmm. Right. Okay. Great. Thank you so much for your responses. Uh, Many of you haven't been able to answer this. Some of you have been. So the domain, or what is the range of values that b can take, is only from 0 to infinity. Logarithm of a negative number is impossible. Log 0 is also undefined. Okay. Right. But what is the reason that all this happens? Because if we deal with an exponential function, you need to understand that if I have a
a to the power x is equal to b. Now this a has to be positive when it comes to logarithm. Any positive number to the power of anything, any positive number to the power of any number will always be positive. It can never be equal to 0 and it can never be negative. So the domain has to be 0 to infinity. Value of x, this can be anything, all the real numbers. Log b to the base a is equal to x. X can take any real number. And what is the graph of a logarithm function? The graph of a logarithm function would look like this. Something like this. Pardon my drawing if it's not very clear. Draw it. This is the log x graph. X is log x. Now, there is a concept called log to the base 10 this and this is the most common. So base 10 and the base e are the most common logarithm forms, where to the base e means natural logarithm. Okay. Common logarithm is to the base 10. Natural logarithm is to the base e. Okay. I'll just show you. Now, here it is. This sheet is already shared with you. Just sharing it once more here. Yeah, it can't be 1. The common logarithm is to the base 10. Natural logarithm is to the base e. Few important properties of logarithm. Now, there are a few pitfalls that have usually been seen. Like, for example, what do you think about these? I'm sharing this on the board. Log a plus b is log a plus log b. I'm writing down a few properties. Log right? These are a few common properties of logarithm, right? Yeah. What do you think about these? All of you agree? सही है ना? Please note these properties down. These are extremely important. There are so many of you in the chat box जो लिख रहे हैं कि हाँ ठीक है सर. Okay. अभी लोग लिख रहे हैं नो सर ये सही नहीं लग रहा है, एक दो गलत लग रहे हैं. क्या एक दो गलत है इसमें? Only 1 or 2 are incorrect, right? That's correct. All of these are incorrect. But yet,
so many of us make these errors so many times. log 2 plus 3 को लिख देते हैं बच्चे log 2 plus log 3. I have seen this happening so often, right? तो ये सारे इनकरेक्ट हैं. तो करेक्ट क्या है? करेक्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे. log mn is log m plus log n. log m by n is log m minus log n. log m to the power n is n log m. log m to the base b is log m to the base a by log b to the base a. So log a by b is not log a by log b. In fact, log a by log b is equal to log a to the base b, and you can take it as a common base, log a to the base 10, log b to the base 10. ये कर सकते हैं. ठीक है. बेस को स्विच log a to the base b is 1 by log b to the base a. Derivative, when I talk about differentiation, integration of logarithm, we say that ddx of log x is equal to 1 by x. How many of you are aware of that? The derivative of log x is equal to 1 by x. ddx of log x is equal to 1 by x. Do all of you agree? If you agree, type A in the chat box. The derivative of log x is equal to 1 by x. ठीक है. कभी ये सोचा है कि ये log x का क्या बेस है? क्या बेस है? Put it in the chat box. Ten E natural base, any base E. यहां पर भी कंफ्यूजन. log x to the base E है ये E. log x to the base E को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जो ln x भी लिखा जाता है. Only the derivative of ln x is equal to 1 by x. Now what happens if I have log x to the base 10? log x to the base 10 को फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन अ कॉमन बेस. कन्वर्जन विल हैपन लाइक दिस. फिर डेरिवेटिव को निकालेंगे तो आ जाएगा 1 by ln 10 into the derivative of log x to the base e is 1 by x. तो derivative of log x to the base 10 will be this. समझ में आया? तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दैट इज कैलकुलस में, we take log x to the base e हमेशा. That's natural logarithm. These things are important to know. बहुत छोटा सा चीज है, but it makes a world of a difference. Okay. Some other related properties of logarithm function. Log b to the base b is 1. Log 1 to the base anything is equal to 0. Log 0 to the base anything is undefined. Okay. And ये सारे formulas तो हमने देख लिए हैं. Right. Now it is also extremely important for us to know a few values of logarithm. These are a few values. Log 1 to the base 10 is obviously 0.
log 2 to the base 10 is this, log 2 to the base e is this. Especially remember these values. To the base 10, ये सारे वैल्यूज को याद कर लीजिए. कभी कभी ये दिया नहीं जाएगा एंड इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली इन दी L3 कोर्स. इफ यू आर ओनली डूइंग द CUET प्लस तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो if you want to do the advanced course you will have to remember these values. ज्यादा नहीं है, खाली 10 वैल्यू है. if you know these values you will automatically be able to know the other values. ये 10 के 10 वैल्यू भी नो करना जरूरी नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 8, log 8 is basically log 2 cube, so that's basically 3 log 2. Now if I know the value of log 2 is 0.301, log 8 का value will be 3 into 0.301, that's basically 0.903. ये देखिए 0.903 है ना log 8 का वैल्यू. तो you don't have to literally remember all these values, right? कौन से वैल्यूज आपको याद करने होंगे? कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स? लॉजिकली कैन यू टेल मी कि कौन से वैल्यूज तो याद करने ही होंगे? डोंट नो. वन टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0. प्राइम नंबर्स और इत्रो परफेक्ट. 2 3 5 7 6 ऑल्सो. 6 को क्यों याद करना है? log 6 इज log 2 into 3. log 2 into 3 is log 2 plus log 3. तो log 2 plus log 3 अगर मैं कर दूं तो log 6 का वैल्यू आ जाएगा मेरा, राइट? ओनली प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, खाली ये आपको याद करने हैं, बाकी सब अपने आप. इज दैट अंडरस्टूड? ओनली प्राइम नंबर्स को आपको याद करना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. So I have given you all this information. Now will it be a good idea to go back to the questions that we just saw? अभी 10 मिनट में now we will be able to answer all the questions. चलो आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, log 27 to the base 3. 27 is 3 cube. तो log 3 cube to the base 3, 3 log 3 to the base 3, log b to the base b is 1, so answer is 3, first one. Simplify this. Log 8 to the base 2, log 8 is log 2 cube to the base 2, plus log 16 is log to the power 4 to the base 2, so this is basically 3 plus 4 which is equal to 7. पहला आंसर था 3, दूसरा आंसर है 7. log 125 to the base 5, log 125 is 5 cube to the base 5 which is equal to 3. इसका भी आंसर है 3. log x to the base 4 is equal to 2. So this x is basically equal to 4 square. Go back to the definition of logarithm. Log b to the base a is equal to x. a to the power x is equal to b. So x is equal to 4 square which is 16. Answer. Log minus 4 to the base 2. Log of a negative number is undefined. तो ये undefined हो गया. Okay. Now ये log 75 by 16 माइनस का मतलब है डिवाइड. 5 by 9 स्क्वायर है ये, तो 9 by 5 स्क्वायर हो जाएगा ये. तो 9 स्क्वायर by 5 स्क्वायर. ओके. इंटू 32 by 243. तो 25 3 जा 3 इंटू ये हो गया 81 81 81 कैंसिल. log 32 by 16 ये हो गया log 2. तो एक्सप्रेस दिस एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, दिस इज इक्वल टू log 2.
Now, if many of you were not able to answer this, now if you know all the properties, you will be able to answer. So instantly, can you see the benefit of knowing the properties, of understanding the properties? 5 minutes में all of you were able to answer this. Agreed or not? If you agree, type A in the chat box. जो भी mistake हुआ, instantly we were able to tackle it. And that is how I want to progress in this entire year. I show you a few questions which you are not able to answer. 5 minutes में we do some of the theory and you're able to answer all of them. That is the power of these classes. Question 5 is log -4 to the base 2. -4 is impossible. Can you ever have a positive number to the base of anything being equal to negative? ये impossible है. X का चाहे कुछ भी वैल्यू हो, to the power of anything will always be positive. टू द पावर ऑफ -50 भी कर देंगे ना तो भी 1/2 है. ये तो पॉजिटिव तो है ही, तो नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता डोमेन में. इम्पॉसिबल, राइट? तो अनडिफाइंड. That also lies in the graph. If you take a look at the log x ka graph, we are never going in the negative side, right? X can never be negative. नेगेटिव होते ही अनडिफाइन हो जाएगा, जीरो होते ही अनडिफाइन हो जाएगा. द डोमेन इज 0 to infinity. नेगेटिव हो ही नहीं सकता. नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए यू विल नॉट टेक, बिकॉज फिर लॉग उस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा. लॉग विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ यू हैव अ 1-to-1 फंक्शन. एक ऑसिलेटिंग फंक्शन पे आप लॉग को अप्लाई नहीं कर सकते, लावण्या, राइट? So whenever we talk about a to the power x is equal to b, please understand this a has to be a positive number. क्योंकि अगर ये negative हुआ, then it becomes a many to one function. Like for example, -2 to the power 2 is 4 and 2 to the power 2 is also 4. तो कौन सा वैल्यू को फिर आप लेंगे एज लॉग? मतलब कि log 4 to the base of -2 is also 2 and log 4 to the base 2 is also 2. तब तो ये 1 to many हो गया. तब तो log fails to be a function. तो my definition of logarithm as a function is contradicted. तो a cannot be negative. a हमेशा positive होगा. Am I making sense? If I am, type S in the chat box. ठीक है, ग्रेट, ऑसम. तो अब कुछ स्नीक पीक हम लोग कोई आईएसआई प्रॉब्लम पे डालें. कुछ कुछ तो प्रॉब्लम हमें करना चाहिए, राइट? तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे. आईएसआई 2008 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. आईएसआई 2008 क्वेश्चन नंबर 6. So this is the question. Question is on your screen. I hope all of you are able to see the screen. If x is equal to t to the power 1 by t minus 1, y is equal to t to the power of t by t minus 1, then what is the relationship between x and y? Okay. Not t for both. Let me show you the question once more. 2008 question number 6. Chalo, let me open that.
नजर आ रहा है प्रॉब्लम? ISI 2008 question number 6. Take a look at the problem and put your answer in the poll. I am activating a poll so that all of you are able to put your answer in the poll. Don't exercise the last option. Sir, please you do. मेरे से तो नहीं हो रहा. Now you should be able to do it. Try it out. Do it, please. Let's do it. ISI 2008 question number 6. So this is what we have. If I take logarithm, what I'll get is log x is 1 by t minus 1 log t. Similarly, I'll get log y is equal to t by t minus 1 log t. Right? So can I write log y is t log x? Log y is t log x or t is log y by log x. Okay. Log y is equal to t log x can be written. कोई बात नहीं. Now, t to the power t by t minus 1 can be written as t minus 1 plus 1 by t minus 1, which is t to the power of 1 plus 1 by t minus 1, which can be written as t into t to the power of 1 by t minus 1, which can be written as y is equal to t into x.
So y, which is t to the power of t by t minus 1, can be written as t into t to the power of 1 by t minus 1, which can be written as t into x. Or in other words, t is equal to y by x. Is this okay? If this is okay, type okay in the chat box. T is equal to y by x. Okay. Now, log y is equal to t is y by x, log x is log x. So this can be written as x log y, x log y is equal to y log x log y is equal to y log x, or in other words, y to the power of x is equal to x to the power of y, and that gives me option C. So first I took log and I got a relationship. Then from here, logically, I got a relationship. Put in this relationship in the logarithm, and I get log y is y by x log x. Therefore, x log y is equal to y log x. That is y to the power x is equal to x to the power y. Clear hai? If it is clear, type C in the chat box. And if you appreciate the problem, type A in the chat box. सही है? चलो एक और प्रॉब्लम. So this is ISI 2007 question number 8. P is this, Q is this. So I can write this thing down as, for example, log x plus log y by log x. This is my P, and my Q is basically log x plus log y by log y, right? So 1 by P plus 1 by Q, you'll notice that this is log x by log x plus log y, and this is log y by log x plus log y. What I'm trying to do is I'm converting log x plus log y as the common base, so that I can just add the numerator, because the LCM is log x plus log y, right? And this turns out to be 1. And that is literally the answer. Okay. So once I realize that 1 by P plus 1 by Q gives me 1, and then you basically take the LCM here, Q plus P by PQ, this becomes equal to 1. Or in other words, P plus Q is equal to P into Q. And that gives me the answer as A. Right? That gives me the answer as A. Is this clear? P is this, Q is this, and I realize that log x plus log y by log x plus log y by log y. This can be treated as a common base. So I take them in the denominator and then add the numerator. I get it as equal to 1. So 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. Therefore, Q plus P is equal to PQ. That's it. Clear hai? If it is clear, type C in the chat box. Awesome.
आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग था. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट अ क्विज which is going to be flashing on the screen and in the group. तो ये करने के बाद में it is a good start to your preparation, and we need to ensure that you know all the concepts in and out. तो प्लीज क्विज को अटेम्प्ट करिए, जितना इंटरैक्ट कर सकते हैं उतना इंटरैक्ट करिए हम लोग के साथ में, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट योर प्रिपरेशन goes well. And please be consistent with each and every class, because after the end of each class we will be telling you to do a quiz, and your performance will not only tell us कि आपका क्या सिचुएशन है प्रिपरेशन में, एंड इट विल आल्सो टेल यू इफ यू आर ऑन ट्रैक और नॉट. सो क्विज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, एंड डू give us a feedback on the class as well. I'll see you in the next class.